But yeah, but it just makes me sad at times that I've reached a point now where I'm like, nothing makes me cry. Like it's, and I used to not be that person, so it's very like, shit, dude, like what happened? Like, मैंने कहीं पर एक बार पॉडकास्ट में कहीं पर सुना था, किसी ने कहा था कि जब हम हंस रहे होते हैं, काफ़ी हंसते हैं, तब कोई नहीं हमें बोलता कि क्यों हंस रहे हैं, मत हंस तू इतना हंस। ये जब हम रोते हैं, क्यों रो, मत रो, डोंट क्राई, पानी पी, रो मत, वो इमोशन सप्रेस करता है। मैंने फील है कि क्यों है, सेम इमोशन है, सेम एनर्जी है, हंसने की एनर्जी भी सेम है, रोने की एनर्जी भी सेम है, हम वल्नरेबल हो सकते हैं, लेकिन हमें रोका जाता है। बट कहीं ना कहीं जो एक्टर होता है, एक आर्टिस्ट होता है ना, उसको मिलता है वो सब खुलने के लिए। इट फील्स लाइक यार ओपन अप हो रहा है, दैट मेक्स हिज और हर माइंड कहीं ना कहीं कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या चल रहा है, इट फील्स सो गुड समवेयर। 100%. Yeah, like just adding on to what you said, कि अगर someone is crying, we always tell them, tension मत ले, blah blah blah. अरे भाई, think of that person ना, probably that person has been bottling up इतना time से कि रोने दो bro, like क्या है ये, like again like I don't know now if this is something in India that Indians feel कि if someone is crying means uh, they are weak. Weak. Yeah. No, But bro. okay. Yeah, exactly. And there's this one thing I've always heard, like no one has told me, good for them, because if they would have told me that, they would have walked off with like teeth missing in their mouth. But don't cry like a girl. Yeah. Oh my god. I am like, what do you mean don't cry like a girl? And I feel like that is why you see so many men who don't put their guard down. They are afraid to cry because they think, shit, they will laugh at me. Yeah, and we will be labeled as weak. Unfortunately, I don't know, like I think, I don't know what is the ये situation. हमारी सोसाइटी ही है, सच बताऊं। Yeah, exactly. अभी रिसेंटली मैं भी आ रहा था, वॉक करके अपने ऑफिस से आ रहा था, एंड एक अंकल हैं, अपने बेटे को छोटा 4-5 साल का लड़का है, वो किसी से मिल रहा है, आ रहा है ना, अनजान स्ट्रेंजर आया, उनसे हाय हेलो कर रहा है, Yeah. छोटा बच्चा ना शर्मा रहा है थोड़ा सा, फिर नहीं मेरे को नहीं पता है, मेरे को नहीं मेरे को। उसके फादर ने उसको बोला कि अरे हाय बोलो, क्या शर्मा रहा है लड़कियों की तरह। ओके, जब मैंने ये सुना, मैं क्या, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मुझे नेचुरल नहीं लगा वहाँ पे। अब हम उस बच्चे को शायद ये सिखा रहे हैं कि रोते नहीं है, शर्माते नहीं है, ये सब लड़कियाँ करती हैं। उसके माइंड इवन ही वाज ओपनिंग अप कि मैं अभी शर्मा रहा हूँ, तो शर्माने तो यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, समझ आ जाएगी कि शर्माना होता क्या है, किस तरीके से शर्माया जाता है। बट उस टाइम लगा कि यहाँ से कंडीशनिंग हो रही है हमारी। आई हैव सीन सम थिएटर एक्टर्स, उन्हें कुछ चीज़ों का गुरूर रहता है, खासकर उस एक्टिंग का। फिल्म वाले होते हैं, उनसे बोलते हैं कि नहीं यार, कि तुम फिल्म करते हो, तुम्हें वो नुआंसेस नहीं पता थिएटर के जो हम करते हैं। वो देखा कभी गुरु लोग, मैंने तो बहुत बार देखे थे, लगता है कि हाँ है। तो हाउ डू यू रिलेट दिस थिंग कि वो ज़्यादा बड़े हैं और फिल्म वाले थोड़े से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। So one thing I'll tell you very honestly, गुरूर भाई हर एक्टर में, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, बट सबके दिमाग में वो है भाई एक्टर, भाई एक्टर ही है, भगवान नहीं है। चिल, डोंट लाइक पुट योर सेल्फ ऑन अ पेडेस्टल, ऐसे नहीं होता है। सो I personally don't think like that. I feel like people who are doing movies, great for them, because that's a completely different medium, and probably now I don't know this, I could be wrong, but I feel like it's more taxing maybe because you have like longer schedules, you have it's like a lot of cut take all of that, but theater में वैसा नहीं है। You do one thing, वो हो गया, you have to move on. You forgot a line, you missed an entire page, जो हुआ है मेरे साथ, and because of me, where like किसी ने तो कुछ क्यों नहीं दिया, and I completely missed out an entire page in the play, and at that very moment I have realized, shit, ये dialogue तो नहीं था bro. I don't know if people are gonna now understand because an entire page I have missed out on, but then luckily it made sense, cover up कर लिया जिसको भी करना था, but I don't think कि
there is a comparison between like theater No and comparison. no, I don't think so. I feel like both are completely different, both are completely beautiful in their own ways. I don't feel like if someone is doing camera acting it is something better or worse. Neither do I think that if someone is doing theater it is better or worse. I just feel like both are gonna teach you different things. Yeah, I have seen some people that like यार हाँ बहुत है है, ना, वो ऐसे बहुत है, नमूना से भरा हुआ है एक्टिंग इंडस्ट्री, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है. बट I don't know now. Like I feel like with me personally, the thing is that whenever anyone comes to me and goes like, "Oh, you're an actor. Which movie have you acted in?" नहीं किया है movie. Sorry. Like I don't know if I should say sorry, but नहीं किया है. Like it is what it is. But that's the thing, right? Like many people come up to me and they're like, "Oh, you're an actor. Wow." I'm like, listen, I'm a human being first. Actor is very secondary. Me being a social media manager or a business solutions manager, very secondary. I'm a human being first. That is my identity. Not that I am defined by the profession I'm in or the kind of job I am doing. I'm not that. And I feel like sometimes I don't know if that is the reason I don't get acting jobs because actors का एक होता है कि I am the best bro. मुझे नहीं है वो. I'm like I am hopeless only. हुआ तो हुआ देखेंगे नहीं हुआ तो what about fuck it. Like that's all. So Do you think actors are more narcissists somewhere? absolutely. They are. I think they have to be. It's not there. They have to be. That's why they are. अगर वो See- बेस्ट नहीं बोलेंगे अपने आप को, Hmm. सत्य को बेस्ट करके भी कैसे दिखाएंगे? They have to go through that process. Hmm. जहाँ पे वो खुद को इतना डिल्यूजन में लेके चल रहा है कि ये मैं हूँ, यानी यहाँ पे मुझे आसपास अपने सिनेरियोस क्रिएट करने हैं एंड फेम पाना है. वो जो नार्सिसिज्म आता है वो फेम के लिए आता है कहीं ना कहीं. Yeah. हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स. Yeah. हमारा काउंट भी कर करेंगे कम से कम 25-30 से ऊपर निकल आते हैं कि जैसे Hmm. काउंट करके बैठे. बट सामने एक होता है ना कि यार कि हीरो का मुंबई में जा गए हैं तो पीछे वाला काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो हीरो बन रहे हैं. ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? कभी लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट गलत है? I personally think it's very wrong. Just I think the other day I was having this conversation with my mom and dad where I said that ठीक है एक्टर्स है, आइटम गर्ल्स है, जो भी है in its respective places. बट भाई if जो कैमरा के पीछे लोग होते हैं वो लोग नहीं होते हैं, you guys would not be standing there to start off with because तुम लोग क्या तुम वहाँ से जाके रिकॉर्ड ऑन करके you will run and come give your shot. No, I feel like all these people, like we always hear this whole light dada, sound dada, etc. If they were not there, none of this would happen. Who's going to do the back work, like back off the camera work? If you are doing your job, which is you being in front of the camera, if those people are not there, which is a much longer and larger list of people, you are maybe 5 people in one scene, 2 people in one scene. But if those people were not there, who's going to record you? Who's going to give you the lighting you need? Who's going to make you look good? Which is what all actors want. कि oh camera में I should look good. Acting गया भाड़ में I should look good. That is not the reason. That is not the point. Like you looking good is not the only thing. Yes, it is one of the things maybe, but it's not the only. You know, हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा, मैं इंडिया की बात करता हूँ, हम्म. बाकी कल्चर में मैंने थोड़ा बहुत सुना है कि Yeah. हीरो का कॉन्सेप्ट है ही नहीं वहाँ. Hmm. एक्टर का कॉन्सेप्ट है. I do feel like somewhere it's that thing of ki if you are a man or like the male gender, then you have to be like a hero. You can't be an actor. Like I mean, in general life, you have to be the one who's saving the world and like a Superman or a Spider-Man or I don't know whatever. हमारे यहाँ अगर एक्टर माचो नहीं बनता है, लड़का माचो नहीं बनता है तो Yeah. हीरो नहीं कहा जाता. Correct. It's a bad thing to say, सच बताऊँ. He should be an actor first, not an hero. Yeah, because I feel like there are so many people who are heroes in real life. They do things for the poor people, they do things for, I don't know, for orphanage or like any, yeah, exactly. Like, so I feel like heroes hai bahut sare, but we glorify only the ones who come on screen, who fight bad people, who have like a very killer six-pack ab body.
but that's not what it is. Like, that is just a character. I feel like when people are coming to watch a movie or a play, they want to see acting. They want to like switch off from their real life and they want to see something, you know, just to get a break from their routine or break the monotony or whatever. But I feel like you rightly said, it fully comes down to the conditioning. यहाँ पे अक्सर लोगों को ये भी रहता है कि अगर आप हीरो नहीं बन पा रहे हो Hmm. तो आप एक्टिंग करना छोड़ दो। यहाँ पे कितने एक्टर एक्ट्रेस हैं कि जब तक आप लॉबी में नहीं पहुंच रहे हो ना, द मेन लॉबी, ए ग्रेड लॉबी, Hmm. वहाँ नहीं पहुंच रहे हो तो आप एक्टिंग करना छोड़ दो। आप Yeah. नहीं कर पा रहे हो या फिर दे ट्राई टू डू सम शॉर्टकट्स। Again, like I said a while back, that it's a very twisted industry, unfortunately. And it is the truth, whether people want to accept it, whether they don't want to accept it. But it is the harsh reality that it's a very twisted industry. So there is this thing, रॉजर डिकिंस हमारे काफी बड़े सिनेमेटोग्राफर, Mm-hmm. उन्होंने बोला था कि इसको आजकल के जनरेशन को इतनी चिंता हो गई है कि 20 साल की उम्र में वो सब कुछ पाना चाहते हैं। 30 साल की उम्र में बोलना चाहते हैं कि अरे यार मुझे कॉन्कर करना है। इट्स Yeah. ओके, उन्होंने बोला था कि इट्स ओके। Yeah. 40 साल की उम्र में एंट्री करो बॉलीवुड में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में और तुम एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो अपनी लाइफ का एंड वो तुम शो कर रहे हो अपने आर्ट फॉर्म में। Correct. इट इज अ बिग थिंग, Hmm. दैट इज व्हाट यू आर। बट यहाँ पर लोग आर्ट फॉर्म की बजाय, अपनी पर्सनैलिटी के बजाय कुछ दिखाना चाहते हैं कुछ पाने के लिए। Yeah. Yeah. मैंने फील है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जिस चीज़ को आप लेके चल रहे हो, वो ज़्यादा थिएटर में निकलती हो, वो ज़्यादा आपके आर्ट फॉर्म में निकलती हो। ऐसी 3 मूवीज़ आपकी तरफ से जिसको देख के लगता है कि एक्टिंग यहाँ से सीखनी चाहिए। Oh, wow. Okay. I don't know if I can name like movies as such, but I think maybe actors I can name. One has to definitely be Irfan Khan. I feel like so realistic, so natural. Like, it doesn't even feel like it's acting. It just feels like he's being himself on screen, and it's technically not himself. It's the character, but it's just so seamless and natural, right? So I think one would be Irfan Khan. Fuck, I was going to say Imran Hashmi for some reason. Fuck. Irfan ग्रेट Khan. एक्टर, उससे भी सीखना चाहिए हमें बहुत चीज़। कैसे किस करते हैं but yeah, Irfan Khan definitely. Irfan Khan and Nawazuddin Siddiqui in Lunchbox. हाँ, My God, like there was nothing, but there was something. Like, I mean, me saying nothing is very rude, but not in that sense. It was just a very raw and just a beautiful, you know, that how there's one scene where both of them are like, I think, standing in some open area. I think it was a balcony or something of that sort, and they both are talking about like how Nawazuddin is like going to get married, and he wants Irfan Khan to like come and, you know, like be his guest and, you know, like represent him and all of that. So beautiful, dude. Like, so raw. There's no like I feel like there wasn't even any acting happening there. Like, it just felt like you walked into a like an area where two people are just having a conversation and you're a third person witnessing it. So I feel like it was very nice. So I feel like these two people are definitely on like a list of like how you just be rooted and, you know, like be natural. इसके अलावा मेरे को बस ये था, लास्ट हम एंड करते हैं इस बात It's पे। over already? Sad. Okay, ठीक है. Okay. We'll talk more in second season and we'll play games also. Fingers crossed I'm gonna be a part of the second season. But okay. नए जो एक्टर्स आ रहे हैं, Hmm. जिनका आना है अभी, जो सोच रहे हैं कि एक्टिंग में जाना है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है, क्या थॉट प्रोसेस वो लेकर आना चाहिए कि वो यहाँ पे मुंबई में आए या किसी भी इंडस्ट्री में जाए? ये एक थॉट प्रोसेस तो जाना चाहिए या फिर ये चीज़ देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए? I think definitely this one thing is very important, that like I kept saying this one thing about how it's a very difficult industry to crack into and stuff. I think one thing is that you need to have a lot of emotional and internal strength, I Yeah. think, because rejection is a very big part of this industry.
If you're going to hold on to it, it's going to be a problem for you as an actor or as an individual. But I think just the basic concept of like don't define or have this notion around your talent ki okay, if 4 or 5 or 6 or 10 even casting agents have rejected you, it does not mean that there's a problem in you. I feel like sometimes we just need to tell ourselves that things are going to fall into place. Whether or not the world believes it, whether or not they want to tell you that, I don't think ये सब कोई मायने रखता है, honestly. That's for me as an individual. But yeah, I just feel like, again, Keep I don't learning. even, yeah, keep learning, keep auditioning, keep definitely observing people, because I think it's keep talking to people. I feel like it's a very big thing, because I feel like there are so many human beings around us, and all of them have such beautiful stories that whether it's beautiful, it's bittersweet, whatever भी है, you know, like I feel like सबका एक एक journey है, and it's I think like हर किसी journey में there is something beautiful that comes out of it. Whether or not it has been a beautiful experience for that human being personally, but I feel like again it's you reach that level of maturity or that phase in your life where you're like, okay, this person did so and so, or this person went through so and so, but there's always a silver lining in everything. That's what I believe in. बट या इफ आई मीन मैं कोई हूँ तो नहीं इतनी बड़ी कि मैं एडवाइस दूँ एंड ऑल, बट लाइक आई जस्ट फील लाइक इट्स दैट ओनली मेनली दैट जस्ट कीप एट इट. मेरे पास 2 एडवाइस रहती है हमेशा एक्टर्स के लिए. पहले तो एक्टर बनना इज अ सेकेंड थिंग. पहले एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है उसे समझो. या ऑफ कोर्स एक्टिंग इज अ सेकेंड थिंग. तुम्हारा करियर है, ठीक है, उसको लाइफ मत बनाओ. पहले ये समझो 100%. कि ह्यूमन बीइंग क्या है, Yeah. मैं क्या हूँ, या मैं ह्यूमन हूँ, मैं किस तरीके से सोचता हूँ, किस Correct. तरीके से बात करता हूँ, Yeah. पहले उसे समझो. ये करेक्ट. फर्स्ट मेरी एडवाइस रहती है. उसके बाद एक्टिंग कर लेना. सेकेंड एडवाइस इज लाइक डोंट गिव अप इफ यू वांट टू बी एन एक्टर. या बस या अगर आप 40 साल की उम्र तक भी नहीं बने हो और आपको लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए, देन डोंट गिव अप. फेयर. दैट्स इट. या इस इंडस्ट्री में यही चलता है यहाँ पे. जब तक Yeah. करते रहोगे तो पहुंच जाओगे एक दिन जहाँ Correct. पहुंचना है. करेक्ट. अभी फिलहाल मुंबई का डेटिंग लाइफ कैसा चला इन जनरल, अगर तुम्हें आसपास सुनने को मिल रहा है कि यार फॉर मी और यू एंड फॉर अदर पीपल, for me it's pathetic. I don't even मुंबई इज द वन प्लेस, फर्स्ट प्लेस जो बोलता है कि यहाँ पे प्यार मिलता है. I think if there's anything or anyone I've fallen in love with in the past few years, it's with myself. Okay, I don't think I have found a single human being in my life who I can be like after my ex, of course, because ex के साथ तो बहुत ही ज़्यादा time थी मैं, but like with anyone new, I'm like, no bro, like, and I think that is a very big problem of being single for a very long time, because you understand so much about yourself that a guy even does something that's as tiny as a speck of dust and you're like, listen, the door is that way, get out. Like, I think that is where I am at right now. I don't think guys and me to nahi, like, Why not do you happening. hate men? I don't hate men. I just have a problem against how they are wired. Like, I think it's a very big problem because women want a certain something, men want a completely different certain something. And I think for men, again, I could be wrong. Now, this is me talking about the experience I have had in my life. It's always ki, acha, so I started texting you because I thought you're very attractive, I thought you're very this, you're very that. जब उनका वो हो जाता है convenience, ghosting, not replying, not picking up calls, and I'm like, my maturity कहाँ है? Like, do you even understand maturity? Like, do you understand communication skills? Do you understand anything? And the funny part is, this has been the case with all the guys. समझो भाई समझो. Any Whatever. advice for your for the guys, for the men या फिर boys?
सो दैट कि वो अपने स्टाइल को थोड़ा सा वो और लोग एनहेंस कर सके। समझेंगे ही नहीं, तो मैं एडवाइस दे के भी आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। ट्राई तो कर सकते हो एक बार। ट्राई कर सकती हूँ, बट इट्स गोना फॉल इनटू डेफ ईयर्स, वो तो पता है मुझे। बट एडवाइस, आई मीन, stop misleading, man. Like, stop fucking misleading. Like, I feel like I said, right, that उनका जब convenience होता है, they will give you everything in the world. उसके बाद जब उनका हो गया कि पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे बंदी अटैच हो रही है, बंदी को चाहिए कि हर बार कम्युनिकेशन करना है, मिलना है, ये है वो है, तभी दे आर लाइक अच्छा लिसन, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग आउट, और लाइक ओ चलो मैं तुझे घोस्ट करता हूँ। भाई क्या है, कैस्पर है क्या तू, क्या घोस्ट करता रहता है ब्रो? लाइक आई नेवर गेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल घोस्टिंग। लाइक इट जस्ट boils down to how afraid or immature, or I don't know what people can be. Like, how difficult is it to just go and tell a person ki listen, nahi hai same wavelength. I agree, we spoke for 1 month, we spoke for 2 months, we spoke for how many ever months, but like nahi match ho raha hai wavelength. बोल दो ना, like end it there. But then if you're going to do this whole thing of कि अच्छा हाँ till yesterday I was talking to you very well, now next day हो गया, you're not anywhere in the radar also, obviously the person's going to be like shit, did I do something, did I say something that the person's backing off? like चल क्या रहा है? like I don't know, I to feel like I've had my fair share of the worst kind of guys I can come across. अभी घोस्टिंग इज नॉर्मल। हाँ, It घोस्ट करना is, इज नॉर्मल। but it's so bad. To wrap up this episode with a beautiful singer we have. Oh my god, I can't believe I'm doing this, but okay. एक सौदा रात का, एक कौड़ी चांद की, चाहे तो चूम ले, यही है तू तोड़ी चांद की। एक चांद की कश्ती में चल पार उतरना है, तू हल्के हल्के के नहा, दरिया ना चल के। मैया मैया गुलाबी तारे चुन ले सारे चुन, मैया मैया कि जिस्मों के पर्दों में दर्द के मारे।